इंजीनियरिंग में होके ऑपोजिट जेंडर कितना ही देखा है। Name a song that you are listening to on a loop nowadays. Kiss someone. Yes. Hi, this is Anurag Parashar. I welcome you to the second episode of Baat Cheet. Today we have Mr. Karan Malik, who has recently graduated from USICT and he is now joining Arizona State University, USA for pursuing his masters. So let's deep dive into his journey by starting with his intro. So, hi everyone, I'm Karan Malik. I have just completed my BTech in Computer Science and Engineering from the University School of Information Communication and Technology, USICT New Delhi. And I'll be going to Arizona State University for pursuing Masters in Computer Science in this August. So, thank you for having me, Anurag. So, Bhaiya, my first question is what things motivated you to go abroad for your further studies? तो एक्चुअली जैसे फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग से मेरा इंटरेस्ट वाज टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड मोस्टली रिसर्च की तरफ. सो इंडिया में इट्स लाइक द मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आर नॉट वेरी रिसर्च ओरिएंटेड, so they focus towards theory or maybe some are very practical oriented, let's say like triple ITs, but research oriented institutes are very less. US में or like I chose US, so in the US culture is very different, तो वहाँ पे most universities prefer to go towards research. So like मेरे interests उनसे काफ़ी align हो रहे थे, so I researched over all the countries and I think that for my career choices and for what I think is suitable for me, I chose to go abroad instead of continuing my masters in India. Okay, भैया, why did you choose USA, specifically USA for your MS? अब जैसे US इज द ट्रेडिशनल ऑप्शन, तो अब काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन है, लाइक कनाडा बहुत है, ऑस्ट्रेलिया है. सो माई थॉट वॉज दैट सिंस आई एम गोइंग फॉर टेक्निकल फील्ड्स, सो US इज द हब जहाँ पे सब स्टार्ट होता है. बेसिकली एवरीवन नोज सिलिकॉन वैली एंड the quality of life might be better in Europe and all, but I think that the jobs and the most number of opportunities and the opportunities for research are the most concentrated and are very large in number in the US. So my decision was mostly based on the number of opportunities and the reputations of the universities. US universities are very well connected, very well funded and are very well reputed. So I thought in some factors ko mila ke, I decided to go for the US. Although there are some very good universities all over the world, like Switzerland, Germany, Canada, Australia overall, but I chose US for these. Like for a beginner who will be seeing this podcast, so what you say, like what will be the path to learn AI? So can you like define a path? ये कर लो and इसके बाद ये पूरा path है, so that वो उसको एक clear vision मिल पाए कि अगर उसे AI सीखनी है तो उसको ये सब करना पड़ेगा. सो लाइक जो भी AI सीखना शुरू करता है, एक स्टैंडर्ड कोर्स है विच इज़ द बेस्ट AI कोर्स और द ML कोर्स यू कैन डू. If you search machine learning on Coursera is an online course site, you'll get a course which is by Stanford University taught by Andrew Ng. So ये बहुत like it's the first course that everyone does. ये कुछ practical नहीं बताता, it will just teach you the theory of all the machine learning algorithms. So machine learning is a subset of AI, so it is basically you're starting towards AI. तो आप एक बार ये करोगे, you'll get to know like they'll show you the applications कि कहाँ पे यूज़ होता है, क्या मतलब कैसे करना है. तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आए, then आपको you'll have to move forward with the practical implementations. So वहाँ पे theory सीख के, अब पता है AI ML is so widespread कि आप नेट पे कुछ भी सर्च करोगे, let's say you want to search an algorithm, you search it on the net, you'll get at least 500 blogs of it, you'll get 100 ways to code it. तो आपको जो वहाँ पे आपने theoretically सीखा है, आप हर चीज़ को एक एक करके सर्च करो. अब आप कोर्स भी ले सकते हो कोई, या फिर आप इंडिविजुअली सर्च करके सीख सकते हो. आई वेंट फॉर ब्लॉग्स टूवर्ड्स डेटा साइंस, KD Nuggets, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं एंड दे हैव वेरी एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स एंड वेरी एक्सीलेंट ब्लॉग्स. सो एक बार थ्योरी करो एंड देन सेम चीज़ की एक बार प्रैक्टिकल करो एंड यू विल बी वेरी सॉलिड ऑन योर कॉन्सेप्ट्स. देन उसके आगे यू कैन कीप एक्सप्लोरिंग थ्रू आउट. आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग दीज फील्ड्स फॉर 2 years नाउ एंड इट इज़ वेरी वास्ट. आई एम स्टिल नोवेयर नियर लाइक इवन अ expert, I would say. Yeah. So like studying in USA or any other foreign country is like very expensive for Indians basically. So what is the scenario of scholarships if you can tell if in USA or in other countries? So scholarships जो होती हैं most scholarships हैं, they are for domestic students. So the university will not consider you for all their scholarships, but some universities will give you scholarships along with the admit letter.
So let's say you receive an admit from University ABC. So आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा you have been given an admit with a scholarship of $10,000. सो ये एक तरीका होता है एंड दिस इज मेरिट बेस्ड दिस ईयर प्रोफाइल एंड वो बोलते हैं कि वी वांट द स्टूडेंट बट वी डोंट वांट हिम टू गो टू एनी अदर यूनिवर्सिटी. सो दिस इज लाइक दे आर ट्राइंग टू लाइक ऑफर यू कि हम आपको बेटर ऑफर दे रहे हैं, वी आर गिविंग $10,000 लेस, तब हमारे पास आओ. इसके अलावा इफ लाइक जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिल्कुल क्रीम लेयर को देंगी ऐसी स्कॉलरशिप्स. आप जैसे जैसे नीचे रैंकिंग्स में जाओगे यू विल स्टार्ट गेटिंग मोर स्कॉलरशिप्स एंड मोर ऑफर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़. अब इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो मोर वायबल ऑप्शन होता है वो होता है कि टीचिंग असिस्टेंटशिप्स और रिसर्च असिस्टेंटशिप्स. सो जैसे हमने मतलब कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, सो द कोर्स हैज़ पेपर्स दैट नीड टू बी ग्रेडेड, द कोर्स हैज़ असाइनमेंट्स दैट नीड टू बी ग्रेडेड, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना होता है, अटेंडेंस लेनी होती है. अब यूएस में प्रोफेसर ये सब काम नहीं करेंगे. द प्रोफेसर्स विल हायर 2 or 3 स्टूडेंट्स एंड दे विल पे देम आर्ली फॉर डूइंग दिस, एंड this will almost cover your entire living expenses and a part of your tuition cost. So ये बहुत वायबल ऑप्शन है एंड ये हर प्रोफेसर के पास 3-3 4-4 टीए होते हैं, रिसर्च असिस्टेंट्स होते हैं. सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज जब किसी यूनिवर्सिटी में एडमिट लो उनके प्रोफेसर से बात करो कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर कोर्स, आई विल परस्यू योर कोर्स एंड आई वुड लव इट इफ आई कैन लर्न विद यू एज एन आरए और आई कैन बी अ पार्ट ऑफ योर कोर्स एज अ टीम. Okay. So that is much more helpful because instead of just getting $10,000 off, you will keep getting a recurring income which you can use. अपना rent pay कर सकते हो, अपने groceries उससे ले सकते हो. Yeah. So that's another way. Yeah, yeah. So, Bhaiya, my next question is about your college life. So, what were your worst and your best experiences of your college life? यार 2 साल तो हमारे घर बैठ के निकल गए. So we were in college for 3 semester and half semester. Yeah. सो जैसे जब पहले पहले नए नए आए थे सो एवरीवन वाज कि अब तो पढ़ना नहीं है, स्कूल से कॉलेज में आए हैं. बट फिर फर्स्ट सेमेस्टर में सबकी सीजीपीए डूब गई तो फिर सब पढ़ने बैठ गए. मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है इतना. तो फर्स्ट ईयर तो 2 सेमेस्टर ऐसे निकल गए कि कर करके कि नहीं पढ़ना यार, पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम आ गए. देन थर्ड सेमेस्टर वी एक्चुअली स्टार्टेड एंजॉयिंग लाइफ. तो हम बाहर निकलने लगे, वी स्टार्टेड लाइक नॉट अटेंडिंग ऑल द क्लासेस एंड हैव सम फन, बाहर घूमना चाहते थे फ्रेंड्स के साथ. सो द थर्ड सेमेस्टर वाज रियली फन. फिर उसके आगे फोर्थ सेमेस्टर में तो कॉलेज बंद हो गया एंड देन लाइक सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया. सो लिटरली कॉलेज लाइफ तो बची नहीं कोई. But still it was fun, like we all found good friends and I think you'll have a lot of fun at USIC. Yeah. So any worst experiences, like any bad experience? सब जानना है इसको. यार वर्स्ट एक्सपीरियंस आई वुड से कि एक लाइक इन एक वाइवा था जिसमें उनको मेरे आंसर नहीं पसंद आए थे एंड लाइक 2-3 प्रोफेसर ने थोड़ा बोला था क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या. बट उसके अलावा द एक्सपीरियंसेस वर गुड and अच्छा था यार. मतलब like there's nothing that stands out as bad and nothing that stands out as very good, but the whole experience was very enjoyable. Yeah. So like did you regret not getting a hostel or will you suggest any perks for like a day scholar, like being a day scholar? Yeah, I was a day scholar because I live in Dwarka. The college is 8 minutes from my home, so I wanted to go to like stay at a hostel, but वो possible नहीं था. बट आई थिंक जितना मैंने सुना है अपने फ्रेंड्स से, लाइक ऑलमोस्ट ऑल माई फ्रेंड्स स्टेड इन द हॉस्टल. सो हॉस्टल लाइफ मैंने ऑफकोर्स मिस की है एंड लाइक सबने बहुत इन्जॉय किया है. डे स्कॉलर के पर्क्स आई वुड से अच्छा खाना है यार, उसके अलावा तो मुझे समझ नहीं आता. यू गेट टू गो होम एंड तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा बट यू डेफिनेटली मिस आउट ऑन हॉस्टल लाइफ. सो इफ यू लिव फार इनफ एंड यू वांट टू एंजॉय कॉलेज, आई थिंक हॉस्टल द बेस्ट. कोई नहीं भैया, आप यूएसए में आपको हॉस्टल तो मिल ही जाएगा. यूएस में रहना है. हाँ. So like now we will talk about your GRE preparation. If juniors want to get all the information, so as you have given your GRE, so how did you prepare and practice for GRE? As I think you have a high score, like if you are getting USA Arizona State University. Yeah. So I scored 335 out of 340. Yeah. And my basic preparation was for 3 months. I planned for 3 months to give the paper, but हुआ क्या, I finished my preparation in March 2020 and the next day lockdown हो गया. So सारे centers बंद हो गए, so I was not able to give the GRE. Like what I would suggest is GRE में there are 2 sections. It's the verbal section which is basically testing your English, and then there's a quantitative section which will test your basic maths class 10th level. मैथ्स इतना प्रॉब्लम नहीं देती. जहाँ पे सब स्ट्रगल करते हैं वो है इंग्लिश, बिकॉज द इंग्लिश इज़ वेरी टफ बिकॉज दे यूज वर्ड्स
दे जस्ट टेस्ट योर वोकैबुलरी. मतलब वो आपको 4 मुश्किल वर्ड दे देंगे. अगर आपको उन 4 वर्ड्स की मीनिंग पता है, देन 90% विल गेट द आंसर. अगर आपको एक भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, देन योर आंसर विल बी रॉन्ग. तो इन सब से लाइक एक बार आपको वर्ड्स आ गए, देन यू कैन स्टार्ट डूइंग मॉक पेपर्स. तो एक बार आप मॉक पेपर्स करना शुरू करोगे, बुक्स करना शुरू करोगे, यू विल गेट टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और जो आप वर्ड्स आपने एक्चुअली सीखे हैं वो कैसे यूज करने हैं. बिकॉज वो वर्ड्स आपको इन्फ्रेंसेस निकालने होंगे, क्वेश्चंस के आंसर कैसे निकालने हैं वो करना होगा. तो मेरा बेस्ट सजेशन इज डू लॉट्स ऑफ मॉक पेपर्स. ऑनलाइन पेपर्स करो, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. विल ऑटोमेटिकली सी, और जहाँ पे प्रॉब्लम दिखे वहाँ पे कि ये पार्ट नहीं हो रहा, जस्ट फोकस ऑन दैट एंड you'll do amazing. It's not a very tough paper. You don't need coaching. So, like as the application process is quite complex. So, did you hire some consultant or consultants firms are there जो कि आपके behalf पे आपका फॉर्म भरती हैं और like कुछ आप प्रोसेस के बारे में बताना चाहो, क्योंकि I think there is a very long process for it. The process बहुत tedious और बहुत लंबा है. Literally 2 months चला है पूरा process. Like नहीं, 2 months तो खाली application चली है. You start preparing the documents, so it was 4 to 5 months. बहुत consultancies हैं. Some of them will do everything for you. They will write your statement of purpose, they will draft your letters of recommendation, they will give you a resume and they will apply for you. And there are some which will help you, like they'll guide you कि अपने SOP आपको ऐसे लिखना है and आपको ये points cover करना है according to your story. So what I went for, I just wanted some help with my statement of purpose. So what, like जो मेरी consultancy थी, it was Gradvine. It's a firm based in Hyderabad, so you can check it out. My experience with them was good with my SOP. Okay, so if what is the average cost, like if of your fee, tuition fee, and your living expenses, like your maybe of hostel and yeah. Almost in almost all universities, you'll have around $30,000 of tuition fee per year. Okay. So if you complete you have a option of completing a course in 1.5 years. अगर आप course overload ले लेते हो, मतलब आप instead of 3-4 courses ले सकते हो last semester में. अगर आपको ले सकते हो, so you can complete your degree in 1.5 years. So tuition fee is around 45,000 to $48,000 for almost all universities. कुछ यूनिवर्सिटीज़ की हल्की ज़्यादा है, लाइक जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेट्स से MIT, कार्नेगी मेलन, उनकी ज़्यादा है. कुछ जो टेक्सास की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी थोड़ी कम है. बट दिस इज काइंड ऑफ द एवरेज दैट यू गेट. सो एवरी लाइक सब यूनिवर्सिटी के पास हॉस्टल और मेस, लाइक दे डोंट हैव अ मेस सिस्टम, दे हैव रेस्टोरेंट्स. सो दे विल हैव रेस्टोरेंट्स which you can buy passes to. So hostel में included नहीं होता. But जो graduate students होते हैं, like जो bachelors नहीं कर रहे, they don't get a hostel. So I don't have a hostel. I have an apartment which I have bought, which I have rented in Arizona, in Phoenix. Okay. So आपकी living cost बहुत ज़्यादा वेरी करेगी. अगर आप न्यूयॉर्क में रह रहे हो, you might need $2,000 per month. अगर आप टेक्सास में रह रहे हो, you might need $700 per month. So city to city depend करती है. I am living in Tempe near Phoenix, where ASU is located. So it's a moderately priced city. Is not very expensive, but it's not cheap either. So it will be around $1,000 per month. Okay. So what are the options that the university provides you in placements? Like which companies visit your campuses, and what is the average package that you are offered? So like पहले तो placement का system बहुत अलग है in India and in US. India में you have companies coming, they'll take your test and they'll hire you on the spot. US में they have career fairs. So you'll have hundreds of companies which will come and put stalls, जैसे stalls वगैरह लगाएंगे आपके campus में, and then they'll have representatives, they'll have HR people of those companies. So let's say you go to Google का stall and you say that I'm very interested. You give a, let's say you give a 30-second pitch. They have, you talk to us, you give us a 30-second pitch कि like pitch yourself, हम आपको क्यों hire करें. You give your pitch and then you give them your resume. Yeah. And if they like your pitch, then they'll mail you afterwards and they'll call you for an interview. So it's not like कि आपको टेस्ट देंगे, आप टेस्ट क्लियर करोगे तो आपको उसी टाइम इंटरव्यू लेके 2 दिन में हायर हो जाओगे. It's a long process. Like you have to go there, you have to put yourself out there, and आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है, आपको देना है, and then they'll come back to you if they like your resume and your pitch. Okay. And average salary, I'd say almost जैसे in CS, average salary is very high in the US because there's a lot of demand. Average salary after MS, not just in ASU, in almost all universities, is $100,000 to $110,000 per year. Yeah. But जैसे अगर आप न्यूयॉर्क में जॉब मिलेगी, so you need more money because वहाँ की living cost बहुत high है. So that salary can go up to 150. But अगर आप टेक्सास में जॉब ले रहे हो, Texas is cheap, so you can get $80,000. So it goes from location to location, but average is around 100.
ओके, तो भैया अब सारे टेक और लाइक टेक्निकल क्वेश्चंस हो गए हैं, तो लेट्स ट्राई सम फन क्वेश्चंस. जो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक नेम अ सॉन्ग दैट यू आर लिसनिंग टू ऑन अ लूप नाउडेज. ओके सो मतलब पुराना गाना है थोड़ा, मतलब इंग्लिश सॉन्ग है. हेयर विद मी, आई हर्ड हेयर विद मी लाइक मेरे लूप पे चल रहा था स्पॉटिफाई में एंड बाई चांस आ गया एंड आई एम काइंड ऑफ एडिक्टेड टू दैट सॉन्ग अभी. बट अच्छा गाना है, थोड़ा पुराना है बट आई लाइक. So, like the next question is, how is your interaction with the opposite gender? Do you think will this change in USA? यार इंजीनियरिंग में होके ऑपोजिट जेंडर कितना ही देखा है. है ना, तो इट्स लाइक कि ठीक है, वी कैन टॉक नॉर्मली, आई कैन टॉक नॉर्मली, बट यूएस में इट्स अ डिफरेंट सिस्टम. मतलब बिलीफ से लगा है, बहुत ओपन कम्युनिटी चलेगा, बट यहाँ तो इट वाज ओके नॉर्मल. अच्छा, ठीक है. So, like, what is your view on college relationships then? यार आई डिड नॉट हैव अ कॉलेज रिलेशनशिप, बट आई थिंक कि कॉलेज में इंटरेस्ट पड़ जाता लोगों का अगर कॉलेज में हो जाए तो. बट मेरा था नहीं. सो Okay, so your favorite childhood TV show? आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ ऑसवर्ल्ड जब मैं छोटा था, तो मेरे को आज Okay, so like if you could travel back in time, like what period of your life would you go or would you want to go? आई वुड डेफिनेटली वांट टू गो बैक टू माय फाइनल स्कूल इयर्स. कि सब कॉलेज में आके स्कूल तो काफ़ी मिस करते हैं. सो आई थिंक लास्ट 1-2 साल स्कूल के आई मिस देम एंड अच्छा है वहाँ पे. अच्छा, तो like how often did you buy veggies for your home or can you bargain? Rate yourself in bargaining. नो आई कैन नॉट बार्गेन. मतलब मेरे से जो रिक्शे पे बैठे जो बोलते हैं मैं एग्जैक्ट अमाउंट देता हूँ, आज तक मैंने 5 रुपए भी कम नहीं दिए उसके. एंड मेरे को लिटरली हर दिन घर पे बोला जाता है कि तेरे से बार्गेनिंग होती नहीं तो यूएस में जाके क्या करेगा. Okay, so like नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं पहले अपना बता देता हूँ कि मैं अपने दोस्त के पीटीएम में एज अ गार्जियन बन के गया हूँ. तो लाइक आपने कभी ऐसा किया है कि आप कभी गार्जियन बना के ले गए किसी को या खुद गए उसके पीटीएम में बन के? कॉलेज में हुआ, मेरा एक फ्रेंड है सूरजमल में, तो उसकी एक कोर्स में अटेंडेंस 30% रह गई थी. तो फिर उससे के टीचर ने कॉल करने के लिए बोला, तो लिटरली उसने वीडियो कॉल कराया बोल के कि मैं उसका पापा हूँ. उसके टीचर ने पता नहीं मना कैसे बट वो मान गई. चलो, लाइक हॉस्टलर फ्रेंड की कोई ऐसी बात जिससे आपको लगा हो कि यार मैं भी हॉस्टल में होता? यार मतलब जब एग्जाम से पहले हम अकेले बैठ के डेस्क वाले घर पे पढ़ रहे होते हैं और फिर कोई फोन करो यार कितना हो गया, वहाँ पे 4 लोगों के बाहर होते हैं पीछे से, तब लगता है यार अकेला बैठ के तो नहीं पढ़ा जाता. हॉस्टल में मतलब पढ़ते तो नहीं है बट एग्जाम से पहले में भी कंपनी रहती है तो वो थोड़ा लगता था. प्लस मतलब ऐसा तो होता ही है, मैंने नॉट लिविंग एट होम यू हैव अ काइंड ऑफ फ्रीडम कि आप कभी घूमने जा सकते हो. घर पे यार कितने बड़े हो जाए बोलना तो पड़ता है, कहाँ है तो 10 बजे तक, कहाँ थे 11 बजे तक. तो वो रहते हैं थोड़ा फ्रीडम का एंड की थोड़ा कंपनी रहती है. Okay, so what will you miss the most about India or specifically Delhi after going abroad, USA? ओके सो जिन लोगों को पता नहीं है, आई टोटली लव दिल्ली. ठीक है, इंडिया में और कोई सिटी मेरे को इतनी नहीं पसंद बट मैं बचपन से दिल्ली में ही हूँ एंड आई लव दिल्ली. तो आई थिंक कि लाइक दिल्ली की वाइब एंड आई लिव इन द्वारका, सो आई रियली लाइक द्वारका. जैसे यहाँ पे मार्केट्स होती है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सब इतना सोफिस्टिकेटेड बना रखा है. बट अगर आप इंडिया से हो तो ये तो आप मिस करोगे. सो आई थिंक लाइक दिल्ली की वाइब बहुत डिफरेंट सी है एंड आई रियली लव इट. तो इसको मैं काफी Segment is something like yes or no type question. Okay, so kiss someone. यस. Completed any web series or a movie just before one exam, like just before this day. यस ऑनलाइन एग्जाम से पहले. Ever caught watching dash 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 dash? नो. कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लोंडा. Okay, fine. So like liked someone you never told to them, like. यस. तो करना. Okay, fine. इसको सीक्रेट ही रखते हैं. बिल्कुल. Like stalked someone. नो. अच्छा. So, have you promised someone you would marry her in future? आई डिड बहुत पहले स्कूल में, उसके बाद. So like भैया हमारा सेगमेंट यहाँ पूरा हो गया है. Like the next segment is like if you can rate in these activities out of 5. Singing. 0. I'm not good at. Okay. Driving. Oh fine. I have been driving. जिस दिन मैं 18 को हुआ, मैं उसके 3-4 दिन में मैंने लाइसेंस बना लिया और मैं कॉलेज की कार से आता था. मैं हर जगह कार से आता था ड्राइविंग. बढ़िया. Coding. कोडिंग आज से 3 or 4. Okay. Sports. Or what sport you like? Just mention. I love football. I love to play football. Next is flirting. It's
वन बोलता था, जीरो नहीं बोलता, मैं वन ले लो। कुकिंग का जवाब हमें पहले मिल चुका है शायद। हाँ, अब मिल गया, अब टू ले लो, अब टू थ्री ले लो यार, पहले जीरो बोलता मैं। अच्छा, तो भैया लाइक वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। लाइक कोई ऐसा मैसेज जो आप लाइक व्यूअर्स को देना चाहें, या फिर हम कुछ पूछना भूल गए हो, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आप? नहीं, आई वुड से कि एक अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो, मतलब या तो ऐसा भी नहीं है कि पूरे टाइम पढ़ते रहो, ऐसा भी नहीं है कि पढ़ो मत। आप जब फर्स्ट ईयर में जैसे आ रहे हो, सो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, अलग अलग फील्ड्स देखो, आप घूमने जाओ, कोडिंग करो, वेब डेवलपमेंट करो, सब करो। बट जैसे जैसे थोड़ा आगे जाओ, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो एक फील्ड पे फिक्स हो जाओ एंड देन जस्ट गो इनटू द फील्ड। मतलब ऐसा मत रहो कि सेकंड थर्ड ईयर तक आप भी ढूंढ ही रहोगे क्या पसंद है। एक बार सेकंड थर्ड ईयर में आके आप फिक्स हो जाओ and you keep working towards that and you'll see that you'll get a lot of opportunities. अब जितने एक फील्ड में ऊपर जाओगे, you'll have like उतने अच्छे opportunities and enjoy your college life and yeah, do what you love. Okay, so like with this we have come to the end of this podcast, and thank you everyone for watching. Stay in the trap, get racks every day. She fuck with me now, I told her too late. My hook in the water, she liking my babe. Ain't saving a hoe, I don't wear a cave. You beef with me, don't think you ever safe. I hop in the foreign and drive like a race. We sipping the Henny, I don't need a chase. We dodging the feds, ain't catching no case.